अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का आज का हमारा टॉपिक है फर्म्स रेवेन्यू करू इन डिफरेंट मार्केट्स। Markets are broadly classified into three types, that is perfectly competitive market, monopoly and monopolistic competition. Perfectly competitive market, as we know it, is a type of market wherein there are large number of buyers and sellers of a particular commodity. Every seller is a price taker, not a price setter, or all the sellers sell a identical commodity. In monopoly market, there is a single seller of the commodity. There are no close substitutes available for that commodity. But under the monopolistic competition, there are few sellers of a particular commodity, with with every seller selling a same variant of a single commodity, or different variants of a same commodity, or they are differentiated commodities. See, commodities of same nature, but these commodities are of we can say these are close substitutes to one another. We will first look into the revenue curves under perfectly competitive market or perfect competition. Under perfect competition, as we know, a firm is a price taker. It cannot set its own price. It cannot change the price in the market. It cannot change the price which is prevailing in the market or influence that price. It can sell any number of units of output at the prevailing price. Whatever price is selling, whatever price is prevailing in the market, it can sell any number of units at that prevailing price. If a firm tries to sell at a higher price than market price, it will lose all its customers. Now, if a firm tries to sell more units of a commodity by reducing its price, or if a firm under perfect competition tries to charge or reduce its price, charge higher price. If a firm in perfect competition, if a firm under perfect competition tries to charge higher price than what is prevailing in the market, it will lose all its customers to other firms, because other firms are selling identical commodities. The customers will shift to those firms, or they will buy from other sellers. Accordingly, constant price means constant average revenue for a firm. Now, if a firm is getting constant price, or price is constant under perfect competition, it means average revenue is constant for a firm. It is marginal revenue is also constant and equal to average revenue. It is marginal revenue will also be constant and equal to average revenue. Table 4 and figure 4 illustrates the behavior of average revenue and marginal revenue for a firm under perfect competition. Now, this table 4 and figure 4 illustrates the behavior of average revenue and marginal revenue for a firm under perfect competition. Table shows that price of average revenue of the product is equal to 5 rupees per unit. Now, the table shows that average revenue or price of the product is rupees 5 per unit. It remains constant for a firm for all levels of output. Now, this price remains constant for all levels of output. It cannot change. It is constant. Constant average revenue implies constant marginal revenue. When average revenue is constant, marginal revenue is also constant. Therefore, average revenue is equal to marginal revenue. Figure 4 shows a horizontal straight line DD indicating both average and as well as marginal revenue. It signifies that at a price of 5, a firm under perfect competition can sell any quantity of output. Thus, firm's average revenue and marginal revenue curves are perfectly elastic under perfect competition. Now, you can look at this table. When we are selling first unit of the commodity, average revenue is 5, total revenue is 5, marginal revenue is 5. When we are selling 2 units, average revenue or price is 5, total revenue is 10. 5 multiplied by 2 is equal to 10. Marginal revenue is 5, because addition to total revenue is 5. इसी तरह से जब हम 4 यूनिट सेल कर रहे हैं, हमारा एवरेज रेवेन्यू प्राइस से बराबर 5 के 5 multiplied by 4 is equal to 20. टोटल रेवेन्यू हमारा 20 है. एडिशन टू टोटल रेवेन्यू इज 5. फ्रॉम 15 to 20 हमारा इंक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू. देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 5. नाउ, this average revenue and marginal revenue curve can be shown with a diagram or a figure 4. आप यहाँ पर देख सकते हैं, if the price is rupees 5 as shown on y axis on figure 4 and output on x axis, price curve, average revenue curve and marginal revenue curve is the curve DD which is parallel to x axis. चूँकि average revenue marginal revenue के बराबर है और प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो ये करू जो है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू करू, दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर.
तो ये एक सेम ही लाइन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इट इज़ ए परफेक्टली इलास्टिक कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द प्राइस ऑफ ₹5 फर्म कैन सेल एनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 up to end. This is because under perfect competition a firm is a price taker. At the given price it can sell any quantity of output. Now we can see the revenue curve under monopoly. And monopoly is a situation where there is only one seller of the commodity. There are no close substitutes or there are no substitutes available for the commodity, or there is only one seller of the commodity. Now under monopoly, the average revenue curve and marginal revenue curves will slope downwards from left to right. They will be having negative slope or showing negative relationship between price and quantity demanded. It means that if a monopolist desires to sell more, he has to reduce price of the product. Now if the monopolist wants to sell more units of the commodity, he has to reduce the price of the product. A monopolist by definition is a price maker. Now a monopolist is a price maker because there are no other sellers of the commodity. There is only one seller, that is monopolist. There is only one seller of the commodity, that is this monopolist. Therefore, he faces no competition from other firms. He can fix whatever price he wants to charge. He can fix whatever price he wishes to charge, but he can sell more only if he lowers the price of his product. Now, if he wants to sell more units of the commodity, therefore he has to lower his price. Thus, there is a negative relationship between price of the product and demand for the product in a monopoly market. Now, there is a negative relationship between price of the product and demand for the product in a monopoly market. Accordingly, firm's demand curve or average revenue curve slopes downwards. Therefore, based on this assumption, the demand curve or average revenue curve will be sloping downwards from left to right, as shown in figure 5 and table 5. Now, look at the table. When we are selling first unit of the output, average revenue or price is 10, total revenue is 10, marginal revenue is 10. When we are selling 2 units, for that average revenue or price has to be brought down. Now the price has been brought down to 9. Total revenue is 18. 9 multiplied by 2 is equal to 18. Marginal revenue 8 है, that addition to total revenue. इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, when we are selling 3 units, average revenue or price has been further brought down from 9 to 8 and total revenue has increased to 24. तो addition to total revenue, that is marginal revenue is 6. इसी तरह से जब हम 4 units sell कर रहे हैं, average revenue has been brought down to or price has declined from 8 to 7. Total revenue is 28 and marginal revenue is 4, that is addition to total revenue. Now you can see the same behavior of average revenue and marginal revenue with the help of a figure or with the help of these two curves. Both the marginal revenue and average revenue curves are sloping downwards. It shows that monopoly firm must lower price if it wants to sell more units of the commodity. The monopoly firm must lower the price or average revenue or the price of the product if it wants to sell more units of the commodity. If average revenue follows, marginal revenue will also fall. Now you can see that average revenue continuously follows from 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7. Marginal revenue also follows from 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4. Now when marginal average revenue follows, marginal revenue also follows. And in this situation, marginal revenue will be less than average revenue. Marginal revenue will be less than average revenue, or the decline in marginal revenue will be steeper as compared to average revenue. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, average revenue has declined from 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7. At the same time, marginal revenue has declined from 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4. Therefore, the marginal revenue में जो decline हुआ वो ज़्यादा steep हुआ है as compared to average revenue, और marginal revenue curve lies below the average revenue curve. Now we will see the average revenue curves, average and marginal revenue curves under monopolistic competition. Revenue curves will be same under monopolistic competition as are in monopoly. जैसे कि मोनोपोली में जिस तरह की शेप है रेवेन्यू कर्व्स की, इसी तरह की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होगी. दैट इज देयर स्लोप विल बी नेगेटिव और दे विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, like in this diagram. Now first we will explain this table number 6. When output is 1, total or average revenue is 10. Total revenue is 10, marginal revenue is also 10. Now when we want to sell 2 units of the output, average revenue or price has declined from 10 to 9.5, total revenue from 10 to 19, and इसी तरह से marginal revenue 9 है. जब हम 3 यूनिट्स सेल करना चाहते हैं तो एवरेज रेवेन्यू फर्दर डिक्लाइन करते हैं फ्रॉम 9.5 to 9,
टोटल रेवेन्यू 27 और मार्जिनल रेवेन्यू 8। इसी तरह से 4 यूनिट्स जब हम सेल करना चाहते हैं तो एवरेज रेवेन्यू जो है इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 9 to 8.5 और मार्जिनल रेवेन्यू है जो है दैट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 8 to 7। लाइक अंडर मोनोपोली, average revenue curve for firm under monopolistic competition also slopes downwards. Now under monopoly, जिस तरह से मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू करू डाउनवर्ड स्लोप हो रही थी, इसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये करू डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। हाउएवर द डिफरेंस इज दैट एवरेज रेवेन्यू करू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक दैन अंडर मोनोपोली। मगर एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू करू जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये ज़्यादा इलास्टिक होगी एज कम्पेयर टू मोनोपोली में। यानी मोनोपोली में यानी ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती थी, यानी हम कह सकते हैं इट वाज रिलेटिवली इन इलास्टिक, बट अंडर monopolistic competition it will be relatively more elastic. The reason for this is that there are close substitutes available under monopolistic competition. अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोली में कोई सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे, एक ही सेलर था कमोडिटी का, उसका कोई सबस्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसकी डिमांड करू जो थी या एवरेज रेवेन्यू करू जो थी दैट वाज समवट और रिलेटिवली इन इलास्टिक, और उसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं थी एज कम्पेयर टू मोनोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू करू है, डिमांड करू है, इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक और इट विल बी मोर इलास्टिक बिकॉज देयर आर क्लोज सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर दैट कमोडिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एज अंडर मोनोपोली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू और आउटपुट में इनवर्स रिलेशनशिप होगी, या प्राइस और आउटपुट में इनवर्स रिलेशनशिप होगी, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस अंडर मोनोपोली। तो इसी तरह से हम देखते हैं अकॉर्डिंगली एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू करू स्लोप डाउनवर्ड्स। इसी तरह से अब इसलिए जैसे आप देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू करू स्लोप डाउनवर्ड्स। द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू करूज आर मोर इलास्टिक। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू करू ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि इनकी सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इलास्टिक होती है। और अगर थोड़ी भी चेंज प्राइस में होती है तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगी, क्योंकि वहाँ से इसके सबस्टिट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं। मोनोपोली में इस तरह से नहीं होता, अगर प्राइस चेंज भी होती है, ज़्यादा चेंज भी होती है, तो डिमांड में ज़्यादा वो चेंज नहीं आ जाएगी, क्योंकि उसके कोई सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है मोनोपोली में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है। It is because in a monopolistic competitive market, goods have close substitutes. In a monopoly market, on the other hand, goods do not have close substitutes. We know that goods with close, as हम जैसे कि हमें पता है, जिन गुड्स के ज़्यादा क्लोज सबस्टिट्यूट्स होंगे उनकी हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है, और जिन गुड्स की क्लोज सबस्टिट्यूट्स नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी भी कम होती है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फर्म्स डिमांड फर्म्स रेवेन्यू करूँ और डिमांड करूँ इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, ए कंपेरेटिव लुक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ फर्म्स रेवेन्यू करूँ और डिमांड करूँ इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, ए कंपेरेटिव लुक। फिगर 7 में आप देखिए, यहाँ पर फिगर 7 ऑफर्स ए कंपेरेटिव ग्लिम्प्स ऑफ प्रोड्यूसर्स रेवेन्यू करूँ और डिमांड करूँ अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। फर्म्स रेवेन्यू करूँ और डिमांड करूँ इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि अब तीनों मार्केट टाइप्स जो है उनकी करूज को हमने एक ही यहाँ पर ये इसमें एक्सप्लेन किया है, एक ही डायग्राम में इनको एक्सप्लेन किया है फिगर 7 में। परफेक्ट कंपटीशन की जो करू है या एवरेज रेवेन्यू करू है या मार्जिनल रेवेन्यू करू है, दैट इज straight line parallel to x-axis, because under perfect competition average revenue price and marginal revenue are same, or these remain constant for constant. These do not change. Average revenue and marginal revenue is constant. Under monopoly, you can see the average revenue करूँ and demand करूँ और average revenue करूँ जो है रेवेन्यू करूँ या डिमांड करूँ जो है, इट इज़ लेस इलास्टिक और इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ लेस इलास्टिसिटी। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की करूँ, दैट आल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी। इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है। डीपी इज डिमांड करूँ अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीपी करूँ जो है इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक करूँ, बिकॉज अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज गिवन
average revenue is constant, marginal revenue is constant, price is given. A producer can sell any units of output at the prevailing market price. A producer cannot influence or change the market price. DM is demand curve under monopoly. It is relatively less elastic. DM जो है ये demand curve under monopoly है, it is relatively less elastic. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्लोप जो है सिटी पर है। ये इस वजह से क्योंकि इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर इसमें ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा चेंज भी आ जाती है तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगी, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। और डीएमसी जो है ये है डिमांड करो फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये करो जो है इसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी, इट इज़ मोर इलास्टिक। इट इज़ बिकॉज देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर ए कमोडिटी अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्ट जो है उसकी जो कमोडिटी है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। जो दूसरे मोनोपोलिस्ट से दे सेल ए सिमिलर कमोडिटी विच इज़ डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ पैकेजिंग, ऑन द बेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। इंट्रिंसिकली जो है प्रोडक्ट सेम है, बस उसको डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग, और इस तरह से इन चीज़ों को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो ये जो करू होगी, डिमांड करू, इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर दिस कमोडिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक लेकर हम अगले लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।